With your kind permission, if we could commence. प्रधानमंत्री जी ने काला धन विदेशी बैंकों से 100 दिन में वापस लाने का वायदा किया था। All of you would recall that in 2011, when the BJP had released their report, the task force they had constituted on black money, they had estimated that the amount of alleged black money stored in foreign banks was to the tune of 25 lakh crores. If I remember correctly, it was maybe the 1st of February 2011. Mr. L.K. Advani, who was then the leader of the Bharatiya Janata Party, had released this black money report where they claimed that the amount of black money was 25 lakh crores. In 2015, after the NDA government came to office, under the Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act, they came out with a amnesty scheme which ran from the 1st of September or the 1st of July 2015 to the 30th of September 2015. Under this amnesty scheme, which applied to money stashed in foreign bank accounts or undeclared assets abroad, the total declaration was 4,164 crores only. And the total tax collected was 2,428 crores. अब अगर आप इसकी तुलना करें कि 2011 में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विदेशी बैंकों में जो देसी धन जमा है वो 25 लाख करोड़ है, और 215 में काला धन का कानून पारित करने के बाद जब वो एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं तो कुल कर मिलता है 2,428 करोड़ रुपया। Now you contrast this with the voluntary disclosure of income scheme that was brought by the then United Front government in 1997. Under the VDIS, the total declaration was 33,000 crores. And the tax collected was 10,000 crores. तो आज से 19 वर्ष पहले जब वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम आई तो उसमें 33,000 करोड़ रुपए की आयु डिक्लेयर की गई और 10,000 करोड़ रुपया कर भारत सरकार ने जमा किया। एंड दिस वाज 19 इयर्स अगो, 19 साल पहले। अब
the BJP NDA government has floated the income disclosure scheme 2016. Now, government estimates were, I do not know whether they still are, that they will get 1 lakh crores under the amnesty scheme. क्योंकि शायद 45% टैक्स रेट है, तो इनका अनुमान यह था कि 40-50 हजार करोड़ रुपए का कर इनके पास जमा हो जाएगा. Till the middle of August, figures which are available suggest that only 4,000 crores, that only 4,000 crores in tax has been collected. और 30 सितंबर को, आज से 18 दिन बाद, यह स्कीम समाप्त होने जा रही है. So the estimated tax collection 50,000 crores, estimated declaration 1 lakh crores, tax collected till the middle of August 4,000 crores. Now, what has happened as a result of this failure is that the NDA BJP government has launched a reign of tax terrorism across the country. जो कर कर्मियों का आतंकवाद है, वो लखनऊ से लेके लुधियाना, बड़ौदा से लेके बनारस, चांदनी चौक से लेके चंडीगढ़, you go to any trading hub in the country and there are these horror stories as to how the small trader, the small businessman, the honest taxpayer is being literally coerced in order to make declarations to fulfill the targets under this income declaration scheme, the income disclosure scheme 2016. और जो बड़ी मच्छियां हैं, जो धन पशु हैं, the oligarchs, the crony capitalists, जो सूट बूट वाले इनके दोस्त हैं, वो सब मौज कर रहे हैं. और जो छोटा व्यापारी है, उसको पूरी तरह से पीसने का कार्यक्रम इस सरकार ने संयोजित ढंग से चला रखा है. नाउ, हम प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने यह कहा था या आपकी पार्टी ने यह कहा था कि विदेशी बैंकों में 25 लाख करोड़ रुपया है. That is 25 lakh crore rupees deposited in foreign bank accounts. Why have you been able to recover only 2,428 crores? Whereas the rest of the 24 lakh odd crores which you had estimated, your task force had released a report. Where is that money? Why haven't you brought that money back? Or was that task force report only intended in order to throw sensational numbers into the public discourse? क्योंकि आपको याद होगा उस समय एक दौर चल रहा था 1,76,000 करोड़, तो हर आदमी जीरो लगाने पे तुला हुआ था. तो उसी शून्य की श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी ने भी 25 लाख करोड़, जितनी बड़ी सनसनी उतनी बड़ी हेडलाइन. So we would like to ask the Prime Minister
where is that 25 lakh crores? And the other thing we would like to tell the Prime Minister, that income disclosure schemes, they work on incentive. They do not work on intimidation. आतंक से यह कार्यक्रम नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर यह धमकी दी है कि 30 सितंबर के बाद उनकी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। तो हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि जरूर कार्रवाई कीजिए, जो टैक्स एवेडर है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए, बट डू नॉट कन्वर्ट द इनकम डिस्क्लोजर स्कीम into a coercive income disclosure scheme. Do not perpetrate a reign of tax terrorism on the small businessman, the honest taxpayer, just because you're ambitious, and if I would call them fanciful targets, are not getting met. Floor is all yours. इसको दोबारा से हिंदी में करने की जरूरत है कि चल जाएगा? हाँ, ठीक जी. Can we finish on this? Anything on tax, and then we'll come back to that. Anything on tax terrorism? $4,164 करोड़ की डिक्लेरेशन हुई थी, और क्योंकि 60% का टैक्स रेट था, तो इसलिए जो टैक्स जमा हुआ है उस एमनेस्टी स्कीम के तहत वो 2,428 करोड़ रुपया है। और उसके बाद जो 2016 में स्कीम लाई गई है, जिसमें इन्होंने अनुमान किया था कि 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा की डिक्लेरेशन होगी, 40-50 हजार करोड़ का टैक्स आएगा 45% टैक्स रेट पे, उसमें से अगस्त के 15 तारीख तक या 20 तारीख तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विदेशी बैंकों में जरूर भारतीय लोगों का भी धन जमा है, और उसका शायद सबसे बड़ा प्रमाण यह है जो पनामा पेपर्स का खुलासा हुआ है। पर अगर आप कहें कि इस बात का अनुमान लगाया जाए कि कितना धन जमा है, तो शायद ये अनुमान तो कभी भारत सरकार ने भी नहीं लगाया है, क्योंकि इसके विश्वसनीय आंकड़े मिलने मुश्किल हैं। पर शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी थी, कोई ऐसा गुप्त मंत्र था कि वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि 25 लाख करोड़ रुपया जमा है। तो अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 25 लाख करोड़ रुपया जमा है, तो भाई आज उनकी सरकार है, उनको वो लक्ष्य पूरा करना चाहिए, 25 लाख करोड़ रुपया वापस लेके आना चाहिए। उसके बनस्पत प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर आपके कोई ना कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश करते हैं, बैंकिंग सीक्रेसी है,
इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, आज से एक हफ्ता पहले। तो ये क्या जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी जब 25 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था उन्होंने? जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, या हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अनुमान था या एमनेस्टी इंटरनेशनल का अनुमान था। हमें इस बात से लेना देना है कि वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो टास्क फोर्स बनी थी काला धन को लेकर, उसमें अधिकृत तौर पर उन्होंने वो अनुमान शामिल किया था। तो इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो अनुमान उस टास्क फोर्स ने लगाया था, वो 25 लाख करोड़ रुपया वो भारत वापस लेके आए। कम Well, Mr. Praful Patel was a minister for 10 years in the UPA government. And if at all he has articulated something, propriety demands that it would be appropriate to first check with him as to what exactly has he said, in what context has he said it, and then only would we respond to it. And in any case, since the articulation was, as you've just enunciated, Maharashtra specific, possibly the party in Maharashtra would be in a better position to respond to it. But the caveat remains that since the NCP was an alliance partner, it would be appropriate to check with Mr. Praful Patel before articulating a response on it. जवाब वही है जो मैंने अंग्रेजी में दिया था, और उस जवाब का सार यह है कि एनसीपी यूपीए के गठबंधन में शामिल थी। श्री प्रफुल्ल पटेल 10 साल तक यूपीए सरकार में मंत्री रहे, और उचित यही रहेगा कि अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, उसको संज्ञान में लेने से पहले, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार उसका परिप्रेक्ष्य, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, इसकी जानकारी उनसे प्राप्त कर ली जाए। Well, the answer remains the same, for the simple reason that it would be appropriate to once check with Mr. Praful Patel what the context of the statement was, whether the quote was a misquote, and then it would be appropriate to respond to it. Ji. तो ये तो आपको जाके श्री अखिलेश यादव से पूछना चाहिए ना। तो आप अखिलेश यादव जी से जाके पूछिए, मंत्री उनके थे, बर्खास्त उन्होंने किया है। अब इस पे हम क्या जवाब दें? हाँ बात है। हाँ।
क्या आप सुदर्शन न्यूज से हैं? तो ये अपना एक इसको वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर देना चाहिए सवाल पूछने से पहले। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं, सुन लीजिए। ऐसा है कि पीस टीवी ने 2007 या 2008 में डाउनलिंक करने की अर्जी दी थी। उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने शायद जनवरी फरवरी 2009 में दोबारा से डाउनलिंक करने की अर्जी दी थी। फिर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में कभी पीस टीवी को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 2012 में हमारे संज्ञान में यह बात आई, अक्टूबर नवंबर 2012 में, मैं शायद अभी सूचना प्रसारण मंत्री बना ही था, कि कुछ चैनल्स अवैध ढंग से भारत में डाउनलिंक हो रहे हैं। उसके बारे में एक सवाल संसद में भी पूछा गया। वो अनस्टार्ड क्वेश्चन था, जिसका जिक्र कानून मंत्री ने भाजपा की डायस से परसों प्रेस ब्रीफिंग में किया। और विडंबना यह है कि इतने साल भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहने के बाद और देश के कानून मंत्री होने के बावजूद he was extremely sloppy with the facts. Let me refer to that parliament question which he had referred to. Whether the government, the third part of that question was whether the government has taken note of a large number of illegal / unauthorized television channels being operated by cable operators in the country. So the question was with regard to the number of illegal television channels being operated in an unauthorized manner. What was the answer of the ministry? The answer of the ministry, in addition to various other things, was that security agencies have identified a list of 24 illegal foreign channels and observed that the contents of some, mark the word some, of these channels are not conducive to the security environment in the country and pose a potential security hazard. The details of the 24 illegal foreign channels are annexed. So therefore, it was not specified either by the Ministry of Information and Broadcasting or perhaps even the input which we may have received on the basis of which this answer was prepared, that which are the television channels whose contents are detrimental to national security. So therefore, what does the annexure state? It does not say that these channels are broadcasting anti-national content. It says this is the list of unauthorized channels which are illegally downlinking. And there is a difference between the two. And therefore, Mr. Ravi Shankar Prasad was attempting to be clever by half and economical with the truth and deliberately mixing his metaphors in order to obfuscate the situation. अब मैं तुम्हारे सवाल पे आता हूं। 2012 में, और मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दे दिया था, शायद आप ही के चैनल से किसी ने पूछा था, कि 2012 में रहमान खान जो अल्पसंख्यक विभाग के केंद्र में मंत्री थे,
उन्होंने हमको एक खत लिखा। उस खत के साथ एक चिट्ठी लगी हुई थी। वो चिट्ठी में यह लिखा था कि कोई चैनल है जो अवैध ढंग से हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, you'll have to bear with me. Now, what is the prescribed protocol when you receive a letter like this? There is a program code and there is an advertising code, which every channel voluntarily undertakes to abide by when they get a license. So under those circumstances, if you violate the program code, and defaming somebody is a violation of the program code, the complaint is investigated, a notice is sent to the concerned channel. If the reply is found to be satisfactory, it is filed. If it is not found to be satisfactory, action is taken in terms of the Cable Networks Regulation Act 1995. तो अगर रहमान खान की जगह रविशंकर प्रसाद भी मेरे को खत लिखते इस तरह किसी की शिकायत करते हुए, तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल वही रहता। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी से यह बात पूछना चाहता हूं कि जिस जाकिर नाइक का वो नाम लेते नहीं थकते आजकल, जाकिर नाइक उनके लिए नया मंत्र बन गया है। 2003 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में इनके जो आज के एलआई हैं, पीडीपी की सरकार थी, क्या यह बात सही नहीं है कि जाकिर नाइक को जम्मू कश्मीर राजभवन में एंटरटेन किया गया, उसका इस्तकबाल किया गया? Is it wrong that the then NDA government in the center facilitated the visit of Mr. Zakir Naik to Jammu and Kashmir? Is it not a fact that the then governor of Jammu and Kashmir received him and accorded him courtesy in the Jammu and Kashmir Raj Bhavan? Is it not a fact that Zakir Naik's 3-day visit in Jammu and Kashmir was organized by the then NDA government and all stops were pulled out to make it successful? And the reason why I am raising this is till that point in time, the information with regard to the indoctrination, alleged or real, of the perpetrators of the unfortunate Dhaka attack became public. Zakir Naik or his organization may have been surreptitious, but they were not on the radar of either the media or, for that matter, the security agencies in the manner in which it happened after the Dhaka attack. So therefore, before the Bharatiya Janata Party starts pointing fingers and imputing motives, it would be worthwhile to introspect. That if Zakir Naik is the devil incarnate, so what were they doing frolicking within courts, the devil incarnate, in their terminology in 2003?
आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यहाँ पे सुबोध गिडियाल जी बैठे हैं, इनका एक छोटा सा अखबार छपता है। उसके अखबार में परसों पीस फाउंडेशन की तरफ से, या जो संस्था है उसकी तरफ से बहुत विस्तृत बयान छपा हुआ है। देखिए, अगर आप महंगाई दर को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से और सितंबर 2016 तक, आपके महंगाई दर जरूर नकारात्मक रहा है, पर उसमें जो खाद्यान्न का कंपोनेंट है उसकी मार निरंतर और लगातार रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह सरकार या तो मुनाफाखोरी और जमाखोरी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती, या उस मुनाफाखोरी और जमाखोरी में लिप्त है। Either they don't want to act against the profiteers or the hoarders, or they are complicit in their activity. क्योंकि जिस तरह से दाल और बाकी खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं और 2 साल से यह निरंतर चढ़ाई चल रही है, हमें याद है कि यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी रोज आरोप लगाया करती थी कि जमाखोर और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 27 महीने में कितने जमाखोर और मुनाफाखोरों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों की दुकान बंद की गई है, कितनों के खिलाफ फौजदारी के कानून या खाद्यान्न के जो कानून है उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। Look, the difficulty with this government is that they swing from the sublime to the ridiculous. And the swing is on a daily basis. If at all that is the claim of the government, why does not the defense minister transparently put it out that what were the terms which were negotiated by the then UPA government, and what are the terms which have been negotiated by the NDA BJP government? Matchstick to matchstick, aircraft to aircraft, and also specify that while what was negotiated by the UPA, if my memory serves me correctly, had a very strong component of a make in India, and what ostensibly they have negotiated, if the negotiations are over, is actually an off-the-shelf purchase. So there is a huge difference between what the UPA had envisaged and what finally they are doing. And if that is the charge of the defense minister or the government or the BJP, since they are experts as misusing the Press Information Bureau, they could possibly use that for a constructive purpose once in a while
and just put out these facts, match to match. And the wheat will be separated from the chaff. Thank you. Yeah, Sandeep. Well, as you're aware, Sandeep, that the goods and services tax has been an extremely convoluted negotiation which has gone on for almost a decade. So for me to respond off the bat as to whether 18% is sacrosanct or there is any degree of flexibility, off the bat would be incorrect. You flagged a question. It would be appropriate that we consult and we come back to you, which does not in any way mean or should not be construed to mean that we are either rigid or flexible on 18%. All I'm saying is that let me check and let me come back to you, because it would require or it warrants a proper response. Thank you.